Hello friends, in previous video we studied that how rational and irrational number together make up real numbers. And even in our previous class we studied how to locate irrational numbers like root 2, root 3 on number line. But we did not prove that these are irrational. And in this video we'll prove that how root 2 is irrational and how root 3 is irrational. And in general we'll prove root p is irrational where p is a prime number. But before we prove that root 2, root 3 or in general root p is irrational, we need the following theorem. And the theorem is, let p be prime and if p divides a square then p divides a. कोई भी ऐसा नंबर एक प्राइम नंबर अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है दैट मीन्स वो a को भी डिवाइड करेगा. नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल. इफ 2 divides 16 that means 4 square. That means 2 divides 4 also. Right? So this was the example. And now taking root 2 to prove as this is a irrational number. So firstly we have to let that root 2 is rational number. हम उसका opposite उसका उल्टा let कर लेंगे. Prove हमें irrational करना है but हम let rational number करेंगे. And if this is a rational number, so this can be written in form of a over b, where a and b are co-prime. Co-prime means the HCF is 1. HCF of A and B is 1. If this can be written as A over B, that means 2 equals to A square over B square. After squaring on both sides, this will become 2B square equals to A square. And by this theorem, because 2 is prime number and 2 here divides A square, that means this implies 2 divides A. And if 2 divides A, so this can be written as 2 into C. A can be written as 2 into C, where C is some integer. Right? Now we'll substitute for A and we'll get 2b square equals to 4c square. If we put this value in this equation, we'll get 2b square. A square can be written as 4c square. This means b square equals to 2c square. Means ये 2 यहाँ divide हो जाएगा and 2 2s are 4. And b square will be equals to 2c square. And here this means that 2 divides b square. And this implies by previous theorem that 2 divides b. And this means that 2 divides b, like 2 divides a. 2 divides a means 2c equals to a, and 2 divides b means 2 into some integer equals to b. That means a and b at least have 2 as a common factor. And if a and b at least have one common factor, that contradicts our supposition that we have taken a and b are co-prime. अगर यहाँ पे लास्ट में रिजल्ट हमारा आ गया कि a और b का कोई एक कॉमन फैक्टर है एक्सेप्ट 1, उनका HCF कुछ 2 आ रहा है, दैट मीन्स हमने जो लेट किया था कि a और b को प्राइम है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गई कंडीशन. दैट मीन्स दिस इज अ contradiction
that A and B are co-prime. So जो हमने let किया था वो wrong proof हो गया. This means that root 2 is irrational number. And in similar way, we can prove root 3, root 5 as irrational number. Now our next question is 3 plus 2 root 5 is an irrational number. And we'll start in similar way. We let that this number is rational number. And if this is a rational number, so this can be written as A over B. This is not compulsory that we are to take these variables only. We can take it as P over Q. And here 2 root 5 will be equals to A over B. And 3 यहाँ add हो रहा है और यहाँ पे जाके subtract हो जाएगा. Now root 5 next step will be A minus 3B after taking LCM. B LCM आ जाएगा and numerator में हमारा आ जाएगा A minus 3B. So next step 2 यहाँ multiply हो रहा था, यहाँ divide हो जाएगा. And in this case here root 5 is irrational number. हमने प्रूफ किया रूट 2, रूट 3, रूट 5 टाइप के जो भी नंबर्स होंगे दे आर इरेशनल नंबर्स. सो हियर रूट 5 इज इरेशनल नंबर, दैट बी इरेशनल, बट दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन बिकॉज A एंड B हेयर आर इंटीजर्स एंड इंटीजर्स को यहाँ सॉल्व करेंगे सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में. पहले तो B अगर इंटीजर है मल्टीप्लाई होगा तो भी इंटीजर आएगा, A इंटीजर है और ये भी टर्म इंटीजर है, सब्ट्रैक्ट होगी तो इंटीजर आएगा. इंटीजर डिवाइडेड बाय अनदर इंटीजर विल बी इंटीजर. तो इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, बट इसके अकॉर्डिंग रूट 5 को इरेशनल है. और अगर इनको इक्वेट करें तो ये तो दोनों सेम होने चाहिए. अगर ये इरेशनल है ये भी इरेशनल होना चाहिए और ये टर्म हमारी रैशनल आ रही है. दैट मीन्स इट कॉन्ट्रडिक्ट्स. सो जो हमने सपोज किया था दैट 3 plus 2 root 5 is rational, that is our wrong supposition. So 3 plus 2 root 5 is irrational. And this was all about exercise 1.3. Now comes to 1.4. कोई भी एक रैशनल नंबर है और इस एक्सरसाइज में ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज गिवन कि वी आर टू चेक दैट इसकी जो एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेट होगी या नॉन टर्मिनेट होगी. तो उसके लिए हमें इसको जब एक्सपैंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन में तो उसकी एक्सपेंशन उसकी फैक्टराइजेशन वो इस फॉर्म में होनी चाहिए. एंड वेयर m और n जो होंगे वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे. राइट अगर इस फ्रैक्शन को इस रेशनल नंबर को 2 raised to power m into 5 raised to power n की फॉर्म में लिखा जा सकता हो और जहां m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे तो दिस फ्रैक्शन और दिस रेशनल नंबर विल बी टर्मिनेटिंग. लाइक 8 can be written as 2 cube into 5 raised to power 0. So जो इसका डिनोमिनेटर है वो 2 raised to power m into 5 raised to power n की फॉर्म में लिखा जा रहा है, where m और n that means 3 and 0 these are non-negative integers. That means hence 17 over 8 is terminating decimal expansion. Next is 64 over 455. So first of all इसकी जो expansion होगी factorization होगी denominator की, this can be written as 5 9s are 45 and this now 7 1s are 7 3s are and 13 1s are. So 455 can be written as 5 into 7 into 13 and इसकी जो factorization है that is not of the form 2 raised to power m and 5 raised to power n.
5 रेज टू पावर 1 तो है बट 2 रेज टू पावर समथिंग नहीं है. दैट मीन्स दिस रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग. द एक्सपेंशन फॉर दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग. And similarly, we can do rest of all questions. If you like the video, do like, share and subscribe. And don't forget to hit the bell icon for another update of our video.